Hello students, welcome in your physics class. So today we are going to see the new chapter that is current electricity. In this chapter we'll start from Kirchhoff law. Friends, Kirchhoff law वैसे तो काफ़ी जनों को दुखद अनुभव दी जाता है, लेकिन हम इसे बेहद आसान तरीके से समझने वाले हैं जिससे ये काफ़ी सुखद और बढ़िया होगा। फ्रेंड्स, हमारी कुछ स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि उन्हें सभी नोटिफिकेशंस नहीं मिलते। सभी नोटिफिकेशन पाने का एक आसान सा तरीका है कि सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकॉन को हिट करिए और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर टैप करें। इससे वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में सभी गतिविधियों के अपडेट्स रेगुलरली आपको पहुंचते जाएंगे। तो किरचॉफ लॉज सीखने के पहले बिफोर डिस्क्राइबिंग दीज लॉज लेट अस सी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म्स। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म इज जंक्शन. Any point in an electrical circuit where two or more conductors are joined together is called junction. फ्रेंड्स, इसे ऐसा कहे कि जहाँ पे दो से अधिक कनेक्शंस को इकट्ठा जोड़ दिया जाता है उस पॉइंट को हम कहेंगे जंक्शन. Now let's see few examples on the screen. The next term is loop. Any closed conducting path in an electrical network is called loop or mesh. Now you are watching few examples of loop. The last term is branch. A branch is any part of network that lies between two junctions. In this figure, there are two junctions labeled as A and B. There are three branches. These are three possible paths, 1, 2 and 3 from A to B. Now watch few examples of the branches. Now you are in condition to understand Kirchhoff laws. So ready? Get set, go. Kirchhoff first law. The algebraic sum of currents at a junction is 0 in an electrical network. That is, summation I is equal to 0 at a junction. Friends, किरचॉफ लॉ यूज़ करते वक्त हमें कुछ साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना पड़ेगा और वो साइन कन्वेंशन बेहद ही आसान है. चलिए जल्दी से इसे समझ लेते हैं. यदि कोई करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा है उसे हम नेगेटिव करंट कंसीडर करेंगे. I1, I3, I4 are considered positive while I2, I5, I6 are considered negative. Therefore, the net sum of all current would be 0. Or you may write this condition as I1 plus I3 plus I4 equals I2 plus I5 plus I6. Thus, this shows that the total current flowing toward the junction is equal to the total current flowing away from the junction. जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन से दूर जाएगा. Friends, this law is based on law of conservation of electric charges. According to the law, charge can neither be created nor be destroyed. That means the number of charges moving toward the junction must be equal to number of charges leaving the junction. कंसेप्ट को और पुख्ता बनाने के लिए चलिए कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं. In this figure, A is a junction. At this junction, the current I approaching the junction, therefore, it must be considered as positive. While current I1 and I2 are leaving the junction, therefore, they must be negative. So, sum of all current, that is I
minus I1 minus I2 must be equal to 0. This is Kirchhoff junction law. Let us see another example. At junction C, the current I1 is approaching toward the junction C, while I2 is also approaching junction C. But I1 plus I2 is a current flowing away from the junction C. So, I1 and I2 should be positive and I1 plus I2 must be negative. So, the net sum at the junction C must be equal to 0. C. Convinced? Now let us see the Kirchhoff's second law, which is called Kirchhoff voltage law. The law states that the algebraic sum of potential differences and the electromotive forces in a closed loop is 0. That is, summation IR plus summation E equal to 0. Friends, जैसे कि आपने पिछले लॉ के अंदर में देखा साइन कन्वेंशन, ठीक इसी प्रकार इस लॉ के अंदर में भी कुछ अलग साइन कन्वेंशंस आपको याद रखने हैं। याद रखने का तरीका बहुत आसान है। स्क्रीन पर हमने आपको सिंबॉलिकली ये शो करके बताया। While tracing a loop through a register, we always traveling along the direction of conventional current. The potential difference across that resistance is considered negative. If the loop is traced against the direction of conventional current, the potential difference across that resistor is considered positive. Friends, यदि आप डायरेक्शन ऑफ लूप को कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन के साथ लेते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर आप नेगेटिव लोगे। लेकिन यदि आप कन्वेंशनल करंट के खिलाफ सर्किट को ट्रेस करते हैं तो ऐसे केस में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर आप पॉजिटिव लोगे। तो ये रहा रेजिस्टेंस के बारे में। अब बात करते हैं सेल के लिए क्या कन्वेंशंस हैं। The EMF of an electrical source is positive while tracing the loop within the source from the negative terminal of the source to its positive terminal. It is taken as negative while tracing within the source from positive terminal to negative terminal. फ्रेंड्स, यहाँ पर आसान शब्दों में समझाए तो आप ये सिंबल देख रहे सेल का। यदि आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग द सर्किट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है थ्रू द सेल तो आप नेगेटिव ईएमएफ लोगे। लेकिन यदि आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग द सर्किट नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा फ्रॉम द सेल तो ऐसे में ईएमएफ ऑफ द सेल पॉजिटिव लेना पड़ेगा। In order to understand this second law, let us see this electrical network. In this electrical network, A, B, C, D, F, G, A is a loop and A, B, E, F, G, A and B, C, D, F, B are loops in the circuit. Now let us consider first loop A, B, F, G, A in clockwise sense. अगर आप clockwise चलते हैं A से B की तरफ तो आपको ये रेजिस्टेंस R1 नजर आ रहा है जिसमें कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में हम सर्किट को ट्रेस कर रहे हैं। ऐसे में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R1 should be taken as negative as per the sign convention and this will be minus I1 R1. Clear? Now we'll move from B to F. Here also we are along the direction of conventional current. So it will be minus I3 R5. Now we'll move from F to G, again in the direction of conventional current. So the potential drop across R3 must be minus I1 R3. Then we'll move from G to A. While moving from G to A, we are moving through cell with EMF E1 from negative terminal to positive terminal. So as per sign convention, EMF E1 must be taken as positive.
and the net sum must be equal to 0. So we get epsilon 1 equals I1 R1 plus I3 R5 plus I1 R3. Now consider the loop B up DCB in anti-clockwise direction. Applying the sign convention, what we get say. So B to F का मतलब हो गया है minus I3 R5, then F to D. Here we'll have minus I2 R4 and then D to C. Then we'll move from negative terminal to positive terminal from the source epsilon E2. Therefore, it will be positive E2. And then C to B. Here minus I2 R2. So we get the equation as shown on your screen. So friends, on solving these equations, we may get the values of I1, I2 or R1, R2. Now the question is how many equations are to be framed here and how many loops are to be considered here. Remember, the number of equations depends on number of unknown quantities given in the problem. If there are two unknown quantities, then we need two equations. If there is only one unknown quantity, the single equation is sufficient to find that value. Now let us see the steps usually followed while solving the problem using Kirchhoff law. The first step is choose some direction of the currents. Reduce the number of variables using Kirchhoff's first law. Determine the number of independent loops. Apply voltage law to all the independent loops. Solve the equations obtained simultaneously. In case the answer of the current variable is negative, the conventional current is flowing in the direction opposite to that chosen by us. दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको समझ में आ गया। तो बस सब्सक्राइब का बटन दबाकर नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन जरूर दबाएं। सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।